India, a young nation, a young country. Over 70% of India is under the age of 35. It's a place where the power of sports nurtures inborn talent, lays the foundation for character development. It inculcates a sense of sharing through teamwork and participation. It fosters a sense of community and a feeling of achievement. In the last 2 decades, India has seen rapid economic growth, and with that, it has seen youngsters from various backgrounds take to a multitude of sports. Sport is the biggest life lesson, and you can learn so much from sport in day-to-day life. The biggest inspiration was to do well for your country, to aim at the highest level. Sport is on a upscale in India. I think it's growing. In the last recent years, the performances of all our athletes have been very encouraging. Sport is a universal language. Everyone understands it. You learn about discipline, teamwork, leadership, and that's the fantastic thing about sport. India, an ancient civilization with a living tradition, recognizes the power of sports and competition. For millennia, people have taken part in traditional sports as part of everyday life. It is this natural talent that forms the foundation of many success stories in modern sport. परिवार में भी कुश्ती का शौक था, दादाजी करते थे, पिताजी ने भी की, बड़े भाई ने रेसलिंग की, तो बस यही था कि भी हम भी रेसलिंग में जाएं और अच्छा करके दिखाएं। 2008 में तो बहुत ही कम स्टेडियम थे कि जो एसी स्टेडियम थे हमारे पास, जो गर्मी में भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी तो रिकवरी नहीं हो पाती थी पूरी प्रॉपर। अब एसी स्टेडियम भी हैं, एसी रूम है, तो सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। अब तो ज़रूरत ये है कि भी अच्छा करके दिखाना। हम लोग बचपन से महाभारत रामायण का तो स्टोरी सुनते आते हैं। बैम्बू बो का कल्चर इंडिया में अभी भी है, लेकिन उसका जो हम लोग का टेक्निक है वो बहुत मॉडर्न हो गया है। हम लोग का भी कल्चर है तो थोड़ा बहुत हम लोग का खून में भी आर्चरी है। सोचे नहीं थे जो हम लोग इस लेवल में कॉम्पीट करके मेडल जीत सकते, वर्ल्ड लेवल, एशियन लेवल में। Every nation needs heroes, and sporting heroes tend to unify and charge the people with energy and hope more than any other. Every time a hero rises from the grassroots, he or she inspires a whole generation to turn to sports. The power of sports helps youngsters from all socio-economic backgrounds reach for the stars. मैं 13-14 साल का तब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, तो एक लंबा अरसा, एक लंबी जर्नी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं रियली काबिल तारीफ़, और आप जो बॉक्सिंग हॉल देख रहे हैं वाकई वर्ल्ड क्लास है। पहले अपने बॉक्सरों के पास या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के पास जब भी ट्रैवल करते थे तो सेकंड क्लास में ट्रैवल करते थे, लेकिन अब उनको एक स्पोर्ट्स कोटा दिया गया जिसमें वो बाय एयर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। Over 70% of India lives in villages, and most of our sporting talent emerges from here. However, a combination of family economic conditions, poor school-level sporting infrastructure, and lack of guidance has prevented many talented youngsters from taking up sports as a serious career. I'm also coming from a poor family. We didn't have anything. When I start boxing, maza guraya, I feel hurt, and so I want to prove myself. So then what I can do as a woman. The government is giving me job and giving me a quarter incentive of 10 lakh. So we had a lot of encouragement and supporting. The Ministry of Youth Affairs and Sports is redressing this imbalance. The goal is to integrate sports with a formal school curriculum, build infrastructure, training programs, and conduct competitions to promote a sporting culture across the country. छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। दुर्ग में मेरा बचपना गुजरा है। मेरे को 16 साल हो गया हॉकी खेलते। तो अब बोलते थे कि जब मैं बड़ी होगी तो मैं छुड़ा दूंगा करके। बहुत हार्ड वर्क किया, सिलेक्शन हुआ, काफ़ी लोग आए हमारा सिलेक्शन किए। फिर मेरे को उस टाइम ही स्पेशल कोटा करके मुझे जॉब दिए थे।
आज हम लोग का जो नाम है, जो भी चीज़ हम लोग ने किया है, आज हॉकी की बदौलत हम लोग को मिला है। The ministry's flagship initiative, PICA, aims to identify, train and nurture the next generation of sporting talent. Through sports, the program contributes to youth development, gender equality and social inclusiveness at the grassroots. இது என்ன பயன்படுறாங்க அப்படின்னாங்க, மக்கள் வந்துங்க அவங்களுடைய சாதி மத வேறுபாடு இல்லாம, ஏழை பணக்கார வேலை இல்லாம, உண்மையை பார்த்தா இந்த விளையாட்டுங்கிறதே எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வந்திருக்குது. PICA is based on 4 pillars of excellence. The first pillar is infrastructure and playgrounds at the village and block panchayat level, so that children from all backgrounds, including those with special needs, have a safe and secure environment to play in. The second pillar is providing sports equipment at every village level unit in the country, so that sports is accessible to one and all. The third pillar is the Krida Shri, the honorary coach and mentor at the village level, who motivates the youth and manages the facilities. And the fourth pillar is sports competitions, to inculcate the spirit of participation right from the grassroots up to the state and national level. PICA aims at multi-layered development to provide universal access, sports for all. NGOs also recognize the power of sports and have made tremendous progress in urban and rural areas. Using sports as a tool, they provide life skills training to children, the youth and the disabled to integrate them with mainstream society and create a positive outlook towards life. I have a problem with my both leg and hip only. I'm not bothered about my disabilities. जितनी भी डिसेबल पर्सन है, कोई असंभव चीज़ नहीं है। आप भी खेलो और देश के लिए और खुद के लिए और राज्य के लिए कुछ करो। Sports is the greatest unifier in our country. Sporting success gives hope to the whole nation, and the mission is to give our children and youth the right support and foster the spirit of achievement for India's future. We are very lucky to get the support from the government that we can play as many as tournaments possible. The games are improving in India, and you see a lot of performances are also coming from every sport. Love for the sport is very important, and at the same time you have to give your 100%. जब मैं ट्रेनिंग करता था उस ज़माने में ना तो रनिंग शूज़ थे और ना ही स्टेडियम थे, और उस टाइम हमारे लोगों के अंदर विल पावर हुआ करती थी। हमें ये चाहिए कि हमारा पूरा देश एक साथ लग जाए ताकि हम अपने देश का तिरंगा झंडा और नेशनल एंथम जो है वो हर स्टेडियम के अंदर बजा सकें। Sport builds character. It just breaks barriers. कंट्री के लिए खेलना तो बहुत बड़ी बात है। यूनिटी की एक भावना पैदा होती है। दिल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Sports for all, making 1 billion hearts beat as one.